रिकॉर्ड आ गया नहीं आया? क्या है, क्यों नहीं लेकर भेजा था रिकॉर्ड आपने? रिटर्न फाइल हो गया था। रिटर्न और रिकॉर्ड में फर्क समझते नहीं समझते? किस पद पर हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। आपको रिकॉर्ड और रिटर्न में फर्क मालूम है नहीं मालूम है? रिकॉर्ड के लिए आज सूचना, किसने सूचना आपको पहले नहीं मिली थी क्या? आज के लिए थी तो आज के लिए थी? ये सर 7/2/24 को आपको सूचना नहीं मिली क्या? सर उस टाइम पे मैं आपकी ओर से कोई अपीयर ही नहीं हुआ, हमने तो अवेलेबल वारंट निकाले थे। नहीं सर, 7/2 को टाइम पे मेडिकल लीव में था मैं। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए, मेरिट्स पे बात करेंगे। ये सर। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? जी सर, लॉर्डशिप। हाँ, क्या इशू पर आपका रिजेक्ट किया गया? Lordship, on the 2 points are involved in this case, Lordship. Respondent number was 5, was given appointment on the ground that she is below poverty line. There is impugn order is Lordship annexer A8 by the commissioner. P8 of Lordship. After appointment of respondent number 5, Lordship, the petitioner challenged the same in appeal before the collector's CD, Lordship. एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर, हाँ फिर क्या हुआ? Lordship, and collector CD, Lordship, by the order annexer A5 जी allowed the appeal of the petitioner ऑन द ग्राउंड on the ground, Lordship, that it wrongly the numbers were given to the respondent number 5 for being below the poverty line. अच्छा क्या Relevant lines are, Lordship, at page 17 in the order of the collector, Lordship. पढ़िएगा प्लीज। Lordship, उत्तरवादी रिस्पोंडेंट नंबर 5 के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन के लिए आवेदन पत्र दिनांक 10/8/2009 को प्रस्तुत किया गया है। संलग्न अभिलेखों से यह पाया गया कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी के आदेश क्रमांक 100 डेटेड 28/2/2009 से संविदा अधीक्षक पद पर दिनांक 28/2/2009 से 27/2/2014 तक उत्तरवादी के पति श्री संजय सिंह चौहान, फादर ऑफ सो अमरपुर को आदिवासी प्री में बालक छात्रावास पूर्णी विकासखंड कुसमी में पदस्थ किया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदन दिनांक 10/8/2009 को उत्तरवादी के पति की पदस्थापना संविदा अधीक्षक पद पर हो गई थी, जिससे श्री संजय सिंह चौहान को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की श्रेणी में आवेदन अवधि में नहीं माना जा सकता है। श्री संजय सिंह पिता सुलभान सिंह के नाम जारी राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की कुल संख्या एवं परिवार में सम्मिलित सदस्यों के विवरण में काट पीट कर कुल संख्या व नाम अंकित कर संशोधन किया जाना पाया जाता है। अन्य अभ्यर्थियों को इससे कम अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी श्रीमती बबीता सिंह को उत्तरवादी ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाइए। ये राइट फ्लैग बबीता और अरे कंपैरेटिव चार्ट कहाँ है मार्क्स का? पीछे लगा तो आपने कहाँ का चार्ट लिया है? साधना केवट, संजू देवी, उषा सिंह, सरोज कुशवाहा, कहाँ चार्ट कहाँ बनाया है कंपैरेटिव मार्क्स का? पीछे लगा हम लगाई देखे तो मैडम आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। वेयर इज अ कंपैरेटिव टेबल जिसमें कि आपने मार्क्स दिए होंगे ना अभ्यर्थियों को? इसी के नीचे बबीता सिंह 12वीं इतना 36.5, लता सिंह 42.3, इसमें बीपीएल के 10 अंक जोड़ दिए गए हैं, जबकि इनके पति ऑलरेडी जो है वहां पर काम कर रहे थे। तो फिर कैसे हो जाएगा? बताइए हिमांशु जी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन फाइल, एट द टाइम ऑफ सबमिशन किस तारीख को था? समय इनका बीपीएल कार्ड वैलिड, बीपीएल कार्ड वैलिड होने से नहीं होता, उनका पति जो है नियुक्ति पा चुका था। It was her responsibility to get the BPL card cancelled. Commissioner has only on that basis they are. But commissioner may say anything. This court is not required. The only issue is that what was the date to file the application? अगस्त 2000। कब की डेट थी? अगस्त 10/8/2009। 10/8/2009 और इनके पति की नियुक्ति फरवरी 2009 में हो चुकी थी। बताइएगा हिमांशु जी। My lords, only 2 months prior to the disappointment process, he was appointed in the post, and that was contractual employment, and his salary was only 3,500, my lord. 3,500 बीपीएल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
बीपीएल BPL requires, there is survey of my lord 2002, आपसे 2003, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। my lord. बीपीएल के लिए क्या वार्षिक आय होना चाहिए किसी व्यक्ति की? मतलब बीपीएल के लिए तो ये मापदंड है कि आपके सर्वे होगा 14 अंक, अगर आपने पा लिया उससे ऊपर तो आप, इससे ज्यादा कुछ आया है तो आपको 4 अंक दे दिए जाते हैं। 5,000 इस तरह, से 5,000 रुपए प्रति माह से? हाँ ऐसा कुछ है कि उसमें अंक, ऐसा मतलब कुछ व्हाट आई लिखा वांट क्यों टू होता है? सबमिट कि अगर आपके पास एसी, कूलर, फ्रिज, आप किस कपड़े नहीं। विभाग से हैं मैडम? हाँ, आप किस विभाग से? इधर बीपीएल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? 5,000 सालाना। 5,000 सालाना से कम आमदनी होना चाहिए। आपके पति को 3,500 रुपए प्रति माह मिल रहा था। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही लगाया है पिटिशनर ने। ठीक है, चलिएगा। एंड माय लॉर्ड, व्हाट आई वांट टू सबमिट कि ठीक। 2 माह पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ। तो क्या हो गया? फरवरी 2 माह पूर्व होता है, 6 माह पूर्व होता है। फरवरी का अपॉइंटमेंट है आपका और ये आवेदन भरा गया है अगस्त 2009 में। मतलब व्हाट आई वांट टू सबमिट कि on the date of this appointment process, this family was not above the poverty line, because for This case becoming is filed above by poverty the- line some time is needed to be there, नहीं, that he ऐसा has. नहीं होता है। And my lord, what other thing is Petitioner that being my agreed BPL to is pay- intact, even petitioner has filed the objection before the tehsildar. Annexure A8 passed by the Commissioner, Rewa Division, Rewa, whereby the appeal filed by the private respondent against the orders of the collector has been allowed by the additional commissioner, Rewa, on the ground that on the date of the appointment, the BPL card issued in favor of the private respondent and her family was yet not cancelled, and therefore she was entitled to 10 marks for the BPL category. Next para. Brief facts of the present case are that applications were invited for appointment to the post of Anganwadi Karyakarta, Anganwadi Karyakarta for the village Gram Panchayat Amarpur, District Rewa, CD, Lord. District CD, CD, Lord. full stop. The applications were called in August 2009. Next para. Petitioner and the private respondent both were candidates to the said selection. Next para. Petitioner was given petitioner had secured 36.5 marks, which were higher than whereas private respondent Lata Singh had secured 42.3 marks. These 42.3 marks included 10 marks for her belonging to BPL category. Next case. Next para. Petitioner's contention is that Collector CD noted this fact that petitioner's husband, respondent's husband Sanjay Singh Chauhan was given appointment in February 2009 on 28 फरवरी 2009 in the as a contract superintendent of Adivasi pre-matric Balak Chhatravas Kodi. Full stop. Admittedly, he was drawing salary to the tune of rupees 3,500 per month. Full stop. Therefore, on the date of making an application, private respondent Lata Singh could not have been considered to be a candidate under the BPL category, and when this objection was raised before the collector CD, he allowed the appeal filed by the present petitioner and had set aside the orders of appointment of Srimati Lata Singh, wife of Sanjay Singh Chauhan. Next para. Shri Shukla, appearing for the private respondent in his turn, submits that since BPL card was not cancelled and petitioner and the private respondent was still under the BPL category, and the appointment was made just 2 months prior to the date of filing of the application, and that was not sufficient for upgradation to the non-BPL category, Commissioner has rightly allowed the appeal filed by the private respondent, and that does not call for interference. Next para. My lord, may I? Here,
Even my lord, there was objection at the appointment process by the petitioner, and it was decided by the expert committee during the appointment process. That Okay. It is also submitted by Shri Shukla, Himanshu Shukla, that objections raised by the petitioner were decided by an expert committee. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Lata Singh was given 10 marks for BPL category. Full stop. There is no dispute nor any documentary evidence produced by Shri Himanshu Shukla for the private respondent that her husband Sanjay Singh Chauhan was not given appointment as contractual superintendent for the tribal pre-matric Balak Chhatravas Podi on 28/2/2009. Full stop. It is admitted by Shri Shukla that his contractual pay was rupees 3,500 per month. Full stop. Officer appearing from the Women and Child Development Department, namely, आपका शुभ नाम बताइए, मैडम का शुभ नाम है, Miss Ansuya Vajpayee submits that BPL के लिए that the requirement for a person to continue under BPL category is that his income should be less than 20,000 per annum. Full stop. Looking to the fact that petitioner, private respondent's husband was appointed on contractual basis and was drawing salary of rupees 3,500, had moved out of the category of BPL by virtue of his such appointment, and accordingly the award of 10 marks to Lata Singh cannot be given a seal of approval. Full stop. Therefore, when 10 marks are reduced, then her total score will come out to 32.3, which is less than the score made secured by Babita Singh, petitioner, which was 36.5. However, it is evident from the list that there is another candidate, namely Srimati Sunita Gupta, who had secured 42.7 marks, which are above that of the petitioner and the private respondent. Therefore, looking to the fact that Srimati Sunita Gupta had secured higher marks than the petitioner and the private respondent, she will be entitled to be given appointment being the highest scorer, and in fact her score was higher than. इनको क्यों नहीं दिया गया था appointment? सेकेंड ईयर था, थर्ड ईयर नहीं था। हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। अच्छा, जी। तो भी तो उसके 10 नंबर ज्यादा थे ना? नहीं, वो फिर कम हो जाएंगे। अच्छा, कम हो जाएंगे 10 जी, नंबर। ग्रेजुएशन का क्या लिखा? ये हटाइएगा। क्या लिखा? सुनीता गुप्ता was given 10 marks though her graduation was not complete. Therefore, when those 10 marks are reduced, then her score will come to 32.7. Thus, petitioner being most meritorious and having secured the highest marks, 36.5, she is entitled to be given appointment as Anganwadi Karyakarta. Therefore, the order of the Commissioner, Rewa Division, Rewa, is hereby set aside. It is directed that appointment orders be issued in favor of the petitioner within 15 days of receipt of certified copy. Petition is allowed and disposed of.